कला मंजूश्री जो कि तृप्ति दिमरी ने प्ले किया है वो एक बहुत ही बड़े मैंशन में हिमाचल के अंदर पली बड़ी होती है और वो पूरी लाइफ अपनी मॉम को प्लीज करने में ही निकाल देती हैं, विच इज उर्मिला प्लेड बाय स्वास्तिका मुखर्जी। एंड दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर लाइफ। जब वो अपने फर्स्ट स्टेप्स लेती हैं बैकग्राउंड सिंगिंग फॉर फिल्म्स के लिए एंड जब वो इतनी पॉपुलर बन जाती हैं कि वो लीडिंग लेडीज की आवाज बन जाती है, और घर पे बचपन में कला जो थी बहुत ही ज्यादा इमेच्योर चाइल्ड थी एंड एट प्रेजेंट शी इज द जेनिथ ऑफ फेम। और वो अपना प्रिविलेज जो है वो यूज करती है ताकि अपने आसपास के फीमेल आर्टिस्ट्स को अपलिफ्ट कर सके। एंड बाय व्हाटएवर शी डज, चाहे वो एक अवार्ड जीतना क्यों ना हो, चाहे वो एक ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स को हैंडल करना क्यों ना हो या ऑटोग्राफ साइन करना क्यों ना हो, शी कैन नॉट शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी जो उसमें प्लंज हो चुकी है throughout her life. So that's where I, SamakshMalhotra, am back on my channel In My Opinion, reviewing the film Qala, which released today on Netflix. So let's talk about all the aspects of the film one by one. Coming to the positive aspects of the movie first, the cinematography. Set in the late 1930s and the early 1940s, which is like sort of a pre-independence India, इसको बहुत ही गॉर्जियस तरीके से शूट किया गया है। आई कैन जेन्युइनली कॉल दिस फिल्म ऑफ द ईयर व्हेन इट कम्स टू सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि अन्विता दत्त का जो हर एक फ्रेम है इट्स लाइक एन इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग एंड बैकग्राउंड इज परफेक्ट, चाहे वो स्नोई माउंटेन्स हो हिमाचल की या एकदम जूल्ड टोन्स कैलकटा की किसी भी नाइट की जहाँ पे द ब्लोट इज ग्लाइडिंग डाउन द हुगली ब्रिज। एंड आई हैव टू मेंशन कि जिस तरीके से लाइट और शैडो का इस्तेमाल किया गया है, इट्स ब्यूटीफुली डन एंड आई कैन से दैट इट्स लाइक अ मेटाफर हियर, द डार्कनेस inside that we have within. That's how they've used lights and shadows in the film. Now coming to the second aspect, which is the theme of the movie. Qala interlinks a couple of themes like envy, competition, persistence, और ये अपनी प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग के साथ एकदम फोर फ्रंट पे आ जाता है विद द कॉम्प्लेक्स मदर डॉटर रिलेशनशिप। और ये ऑब्जर्व होता है थ्रू द पॉइज्ड मदर जब उनकी बेटी उनको एक डिस्टेंस से देख के उनके एक्शंस को, उनके लुक्स को कॉपी करती है एंड शी ट्राइज टू कैच हर अटेंशन एंड हर वैलिडेशन अंटिल द वेरी एंड ऑफ द फिल्म। तो उर्मिला जो है वो उन्हें सजेस्ट करती है कि अपने फादर की लेगेसी को वो फॉरवर्ड लेकर जाए एंड शी फॉलोज दैट एंड बिकम्स अ सिंगर हरसेल्फ। नॉट ओनली दैट, शी मेक्स इट big, for the film oscillates between the current day when she is a Didi, which is a revered singer, and the past where she was given the extra mile to please her mother but was never able to. और इतना ही नहीं, ये कला की कॉम्प्लेक्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही है उनकी मदर के साथ जो इस मूवी का क्रक्स डिफाइन करता है and makes it a very toxic musical drama. And how it goes forward, how the movie progresses further is by the introduction of Jagan, which is Babil Khan, जो कि बहुत ही talented singer है जिन्हें उर्मिला ने accidentally discover कर लिया है। The appearance of Jagan, which is Babil Khan, who's an orphan who sings like an angel, and Urmila's absolute devotion to him like adds to her own isolation. And now the unexpected theme of the film जो मैंने note किया, it explores the mental health and it is narrated through the bit by bit worsening conditions of both the singers. One is going through change and it doesn't foresee कि ये situation जो है वो change होने वाली है, and the other one is struggling with something which we do not know of yet. And the makers do a terrific job like अपने protagonist की struggles को दिखाते हुए and trying to make sense of exactly what is happening to her without any language to explain it in the 1940s. अपने सोसाइटी की रिफ्लेक्शन तो उन्हें दिखाना ही था, तो उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे एक डॉक्टर उस सिंगर की वैल्यूएबल विजिबल टर्मोइल मेंटल हेल्थ इलनेस को ये बताता है that everything is ranging from her exhaustion to the artistic leanings, and also not only this, those days we know it's menstruation which they are referring to. And of course it's a musical movie, so how can we not talk about the music and the BGM? So the music and the singing, it's quite lovely. Both Dimri and Khan, they look as if they're actually singing and not just mouthing out their words. इसके बावजूद जो सिंगिंग इंडस्ट्री में misogynistic atmosphere है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया गया है, where the female singers are termed as spies or courtesans. And there's a lyricist Varun Garover जिसने प्ले किया है, मजरूद नाम है जिनका इस मूवी में. That's the only person who tries to keep up the spirits, like Kala's dropping spirits को वही ऊपर लेके जाते हैं. Apart from this, jealousy, anger, sadness,
oppression, they all roil together, coming to a boil. And music by Amit Trivedi, like the tracks like Rubaiya and Shauq, they have transforming quality to it. Every track drags the listener to 1940s का कोलकाता, जहाँ पे इंडियन सिनेमा की ओरिजिनेशन हुई थी, जहाँ जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा का म्यूजिक भी जाना जाता है. Qala is about so much more when it comes to music, and this just one paragraph will not be enough. You'll have to watch the movie for the music. Now coming to the characters of the film, for the film, which is run more by the female characters, we've already discussed the mother and daughter. It's the men as well who are in the smaller roles, but they stand out, like Sale and Kochar who are there. The debutant Babil Khan is pitch perfect, of course, and he does remind you of his father, the late brilliant actor Irfan Khan, because of some of his features. Of course, the inherited acting जो उनमें है, it's quite evident, and I cannot wait कि वो अगला कौन सा project लेंगे, because you whenever you see him on screen, not only his features but his acting will remind you of Irfan Khan. Now coming to another point, which is इस movie का comparison with Bulbul, because the feminist tone of Anmita Dutt's supernatural thriller Bulbul, जो कि 19th century में plot की गई थी, ये भी early 90s यानी कि pre-independence era में ही shot की है. So we can say that both the movies were in the pre-independence era, and both will be compared somewhere, because both have underlining tones of feminism to it. For example, there's a producer जो suggest करता है कि अब इनकी female secretary को हटा के दूसरा secretary place किया जाए, and that's where Qala says, सिर्फ सेक्रेटरी भी तो कह सकते थे ना, फीमेल लगाना जरूरी था क्या? एंड दिस सिंपल थॉट, मतलब इनका रिएक्शन प्रोड्यूसर का इतना वियर्ड आता है, जैसे उन्होंने पता नहीं क्या चीज देख ली हो. एंड लाइक बुलबुल ऑल्सो, दिस मूवी हैज it navigates through sexual harassment, highlighting that the times may change but reality tends to remain the same because of the people in power, and people in power are the one who prefer so to be. Now coming to the sequences and the scenes. सबसे पहले इस मूवी ने इतने अनकन्वेंशनल टोन को टच किया है, इतनी अनकन्वेंशनल रूट से ये लेकर जाता है अपने मूवी को फर्दर, जो कि मदर डॉटर में नॉट सो सीमिंग रिलेशनशिप दिखाई हुई है इन्होंने, विच इज नॉट टू ऑफन सीन इन बॉलीवुड सिनेमा. तो दत्त की जो एबिलिटी है टू क्रिएट सच अ कॉम्प्लेक्स फुल बॉडीड इमोशंस, एंड इन सच अ मेजर कि बुलबुल में भी उन्होंने ऐसा ही दिखाया था, इट वाज वंडरफुल, एंड हियर एज वेल इट्स वंडरफुल. एंड वन ऑफ द मोस्ट evocative scenes here, sequences here, is amongst the several there in the film. It's Qala's first public outing, which goes off well enough, and it's piped through the full throated Jagan, जो कि एक local गुरुद्वारा में raise हुए हैं. Sorry, I gave out the spoiler. So these scenes and sequences just take your breath away. Now turning the page and flipping the coin, coming to the negative aspects of the film, number one being that it's too gloomy for me, and it doesn't lift off the screen as much as it should, I believe. There's a strong reason there कि Qala का जो one note tragic mood है जो वो throughout the film maintain करके रखती हैं, and whenever she smiles we're really happy she does that, but it doesn't really last too long. But she's able to breathe. Even then the camera just stays in tight close up और उनके tears दिखाए जाते हैं tracking down her face, and after a point the gloominess becomes so monotonous to the tone of the film that the viewers they want something happy, something chirpy, something amusing to happen to the film, to her, to other side characters who can just get past the gloominess. But okay, Qala has done a lot for films in 2022, but there's one more thing that it definitely does. It has showed the filmmakers जो कि entertainment purposes के लिए मूवी बनाते हैं, not for educating people, that just with a bit of nuance और एक good story के साथ आप एक इतना अच्छा legacy पीछे छोड़ के जा सकते हैं in such subtlety. Just for this effort, we applaud the movie Qala. So that was the video, guys. I absolutely loved the film, and I'll definitely recommend all of you to go ahead, tune into your Netflix and watch this film right away, because finally Bollywood has done something different, and everyone's just about debating that Bollywood's over, people are boycotting things, but then we have people like these who are producing and directing such amazing movies. We have new actors coming in the pipeline which are making different content, and mental health is such an important topic after COVID that everyone's been talking about
about it. And finally, there are movies with the underlying themes of mental health that are being made. So that's why I think you should definitely tune into Netflix and watch this. That was the video, guys. If you liked the video, then please like the video. And if you loved it, then please share it with all the Bollywood lovers you know, so they can also discuss the movie with me in the comments down below. Let me know how you find the video, and let me know how you found the movie if you've seen it in the comments, and we can discuss it further. Thank you so much. Signing off.